Hi, good morning, friends. We are back again on this Wednesday, continuing with the same topic, finding your future successor, but it is part two. In this portion of today's Facebook Live, we will discuss about primarily into the factors where a family-run businesses go through. At the same time, I would also like to, tell you that wish you that and you have enjoyed the last long weekend, including Monday, to revitalize your entire entrepreneurship so that you can think it your future much more clearly. So that becomes a reset time. When you get a holiday, an unexpected holiday, and it is a long holiday, then you actually get a proper time to reset. Coming back, we are on with our next session on finding your future successor, part two. In this part, we will actually find out what are the five different ways. We'll do a small recap and then come back to what it is and how to go ahead. Particularly, we are discussing about the family run business. Okay, a small recap. Who was that individual that we are looking for? They are actually, those people are actually prepared to accept responsibilities, committed to excellence, ready to visualize success, able to protect the vision, the original vision of the company, prepared to plan workable actions. They don't just waste their time in planning to plan what to do. They actually plan out the workable actions and put it in place. The most important was determined to follow and respect the systems which has been placed before hurriedly getting into the action of changing the system and bringing a change. Capable of ideating, innovating, and initiating the best practices which will be good for the company. This I repeat once more, capable of ideating, innovating, and initiating the best processes, practices which will help the company to grow farther from where they are. And then finally, resilient to taking decisions during difficult situations. So these are the few areas where we try to understand who is that individual. Now, today as I have already declared that today we have been there in the different type of businesses. Mostly in India, we have got family-owned businesses. Primarily, the SMEs and MSMEs are constituted of majority of the family-run businesses. So this discussion of today is mainly directed towards them because the businesses which comes down from generation to generation, it passes through various tides and webs because of the different thought processes, the changing processes, the changing environment. And so changing inside the organization becomes much more important because if we don't change, then probably we will not be able to catch up with the current situations. The same effort which was required to carry on the business years back in the last generation or the generation before may not be fruitful, effective, and efficient under these current situations. So let us first discuss about the family-owned or the family-run businesses. What is a business succession planning? A business succession planning is a series of logistical and financial decisions about who will take over your business upon your retirement, demise, or disability.
because the business has to run irrespective of whatever is happening or coming on the way. So business succession planning is a series of logistics and financial decisions about who will take over your business जब आप रिटायर करेंगे, भगवान ना करे आपका साथ कुछ हो गया और somehow आप काम करने के लिए और नहीं कर पा रहे। तो ये सक्सेशन प्लान को लिखने के लिए द फर्स्ट थिंग, पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द आइडियल सक्सेसर जो आपका बिजनेस को संभाल सकता है, हाथ में लेके उसको आगे बढ़ा सकता है, एंड देन डिटरमिन द बेस्ट सेलिंग अरेंजमेंट। सो एक सक्सेशन प्लान स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए व्हाट वी डू, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई हु इज द आइडियल सक्सेसर। एक आइडियल सक्सेसर को ढूंढने के लिए वी हैव टू सी दैट पर्सन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं है, एंड देन हाउ टू पास ऑन दैट सक्सेशन to that person. That is the main thing. This usually can be a buying, selling agreement. You sell your business or you buy a business from other, secured with a life insurance policy or a loan. So these are the different factors of a business succession planning. तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द 5 कॉमन वेज आपका बिजनेस को आपका सक्सेसर के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए कौन सी 5 कॉमन वेज है, एंड देन वी विल गो डीपर इनसाइड इट। हम लोग थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वन, को ओनर। बिजनेस में को ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। सो हम हमारा बिजनेस को ओनर के हाथ में हम बिजनेस दे सकते हैं। नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू आवर को-ओनर, दैट बिकम्स इजी। ऑफ कोर्स दैट बिकम्स इजी, बट एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट आल्सो। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज में जब हम डिसीजन लेंगे तो हमको जो गुड पॉइंट्स है एंड जो बैड पॉइंट्स है दोनों को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज को-ओनर सेलिंग योर शेयर्स और योर ओनरशिप। कभी कभी आप 40% आपका शेयर आप दे दिया किसी को, सो यू मेक हिम द ओनर एक्चुअली। सो सेलिंग योर शेयर्स और ओनरशिप्स इंटरेस्ट टू योर ओनर। सेकेंड वन, पासिंग ओनरशिप इंटरेस्ट आपका फैमिली का अंदर ही। नाउ हियर आल्सो when you are thinking जे आपको आपका बेटा या तो आपका फैमिली में और कोई है जिसके ऊपर आप एक टोटल बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आर दे रेडी। अगर आपको याद है कि हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि वी विल नॉट गेट अ रेडीमेड सक्सेसर, वी हैव टू प्रिपेयर अ सक्सेसर। So in this portion, getting an hire to your own business is a long process. So what happens whenever we think कि हमारा बिजनेस को हम अपना बेटे को देके जाए या तो बेटी को देके जाए या तो फैमिली में और कोई मेंबर को ट्रांसफर करके जाए, first try to induct that people, those people into your organization and let them run through the mills within the organization. सभी लोग को सारी डिपार्टमेंट का जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। If the person is not able to understand the different working pattern of the different departments आपका ऑर्गेनाइजेशन का अंदर, then it will be very difficult for him or her to take the ownership of your organization.
सो ट्रेनिंग योर पीपल, जो भी आपका फैमिली मेंबर को आप सोच रहे हैं कि आप उसको ये बिजनेस हैंड ओवर करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट का, how they mix with people, how they actually carry on their responsibilities, what are their behavioral style within the organization, बहुत सारी इंपॉर्टेंस देता है एक आदमी को चुनने के लिए। की एम्प्लॉय, बहुत सारी केसेस में देखा गया कि द ओनर ऑफ द बिजनेस has got nobody to take care of their business. In those cases, it becomes a typical situation of finding out somebody either ऑर्गेनाइजेशन का बाहर से और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। सो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं, in that particular case you have to find out that key employee. And who is that key employee? The key employee is that person who has got all the qualities what we have decided in the slide before. की एम्प्लॉय को बिजनेस देने में एडवांटेज क्या होता है? की एम्प्लॉय को बिजनेस देने में एडवांटेज यही होता है कि जितना साल आपका साथ वो स्पेंड किया है ये बिजनेस चलाने के लिए, he has seen all the ups and downs, the pros and cons of each and every activity of your business. So for him, it becomes easier. But yes, it is also a very difficult situation to get into that, to handing over your business to your key employee. But sometimes it really works wonders. Outside party. आपको ये बिजनेस आगे नहीं लेके जाना है। अगर आपको ये बिजनेस आगे लेके नहीं जाना है तो आपको ये बिजनेस या तो बंद करना पड़ेगा और ये बिजनेस आपको और किसी को हैंड ओवर करके देना पड़ेगा। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू डू अ बिजनेस और व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, you have to look into two aspects of your growth. One is scalability और दूसरा है sellability. अगर आप बिजनेस को स्केल अप करके वो सिचुएशन में लेके आते हैं जहां पे यू विल कंटिन्यू विद द बिजनेस, यू हैव सीन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, तो आपको सक्सेसर लेके आना है, दैट इज स्केलेबिलिटी। एट द सेम टाइम अगर बिजनेस स्केलेबल होगा तभी बिजनेस सेलेबल भी होगा। सो जब आप बिजनेस को बाहर कोई एंटरप्रेन्योर को बेचने जाएंगे, हैंड ओवर करने जाएंगे, तो आपको वो बिजनेस को वो जगह में लेके आना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स सेलेबल ऑटोमेटिकली। ओके, सो द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग योर शेयर और योर ओनरशिप इंटरेस्ट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ऑर्गेनाइजेशन का बाकी जो ओनर्स है उसका थ्रू डिवाइड कर देना, एंड you come out of the business. So there are 5 common ways. Number 1, co-owner, आपका पार्टनर को बेचना, बेच के ओनरशिप इंटरेस्ट हैंड ओवर करके निकल जाना। फाइंड आउट एंड हायर passing ownership to your next generation, whether it आपका बेटा है, whether it can be your बेटी, your other family members, your wife, anybody, you passing your ownership interest to your kids or to your other family members. Number 3, key employee. A key employee is a person who has got integrity within them, who has got the power of ideate, innovate, initiate the best practices, जो हम क्वालिटीज लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो इफ यू फाइंड समबडी, अगर आपको मिले आपका ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई की एम्प्लॉय है ऐसा, ही इज द राइट पर्सन टू बी
to hand over the business to. कोई नहीं मिल रहा है, you get a better price, you can sell your organization outside. एक बाहर पार्टी को, बाहर entrepreneur को, you can sell your business. The fifth one is to distribute your ownership interest among the other owner of the organizations so that they remain the owner of the organizations and you can come out of that. Now, when we talk about this, when we talk about all these 5 commons, I think it is good to get a little bit inside the organization. And so what happens to find out what are the major areas, that these 5 points can work through. So, for example, let's take a co-ownership. When you take a co-ownership, the most important part is to create a proper understanding. अगर आपका ओनर के साथ, co-owner के साथ proper understanding, because now you are actually dividing your organizations and giving your half to them. Correct? आप अपना शेयर को, आपका जो ओनरशिप टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसको नलिफाई करके आपको को-ओनर को हैंड ओवर करना है. This is the process what you're doing. In that process, sometimes as human beings, it is very difficult to leave the entire responsibility, the authority, to hand it over to the second person. The second point, getting a successor from family का अंदर से, from within the family, easy लगते हैं, लेकिन उतना ही वो difficult है. Because जब परिवार का अंदर से आप किसी को चुन के बाहर लेके आ रहा है और उसको अपना बिजनेस में बैठा रहे हैं, so it has to be a completely deciding, a very difficult deciding factor. It becomes a very difficult deciding factor whom to choose, what will be the repercussion of the other family members, especially बहुत सारी जॉइंट फैमिली में जब कजिन ब्रदर्स एक साथ बैठते हैं, जब उन लोग को जब उम्र हो जाता है और उन लोग को जो फैमिली मेंबर्स को या they hand over to their son or their daughters, so how to divide the responsibility pattern, the responsibility factor within the siblings, it becomes very difficult. But if it is done with a conscious of everybody, then it is a wonderful way to transfer your responsibilities, your business within your family. Key employee. Yes, it is always good because you are actually getting a very much ready-made successor of your business, because आप उनको प्रिपेयर किया है, आप उनको बिजनेस में दाखिल किया है, बिजनेस चलाने के लिए उसको जो IQ लेवल है, वो IQ लेवल को आप टेस्ट किया है, and you are sure that he will take this business upwards. He will not let you down. But there may be other considerations also. Now, what are those other considerations? The other considerations are that, is he really fit to take over the responsibility of running an organization? The best person of a department is always the best person of that department. So when an organization is a collective area where all departments work together to see the growth of the organization, each department are aligned with the other department
so that the chain of actions happening within the organization actually gives a result. The most important quality that key employee should have, the power of mixing with people, the power of delegation, and the power of authority altogether. And out of these three, the power of delegation with authority is very important. Coming up to the outside party, yes, you are आप अपना सारी बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर को दे रहे हैं, वहां पे आपका बोलने का आपका राइट्स बिल्कुल नलीफाई हो जाता है. अगर आपका बिजनेस का ऊपर राइट्स कंप्लीटली नलीफाई हो जाता है तो उसका ऊपर आपका और कोई राइट्स रहता नहीं है, बिकॉज यू हैव सोल्ड, you are actually selling your entire business to them. Number 5 is the distribution of your ownership interest back to your company, so that जितना co-owners है, remaining owners के अंदर आपका shares, आपका ownership rights interest equally distribute करके, then they take over the functioning of the organization. So these are the 5 common ways to transfer your business. And when you do this, then you can take out all these 5 points and work on that. In fact, we will also talk about the pros and cons of each and every steps, so that it will help you to make sure that which is the right step for you. It is not that all 5 are right for you. It is not that none of the 5 are right for you, but there are some areas where you can actually find your points which you can utilize it. So today we are there with this entire business, how to find business successor, part 2, and in the next part we will again continue with the discussions, a little bit more digging inside the different points. And when I check out from today's session, I just want to repeat about Action Coach, the organizations whom we all belong to. Mr. Brad Sugars on the left, who is the owner of the world's #1 business coaching organization, currently having offices across 95 countries. The organization of Action Coach was actually conceived in Australia and then handed over, came down to Nevada in 1993. The vision of this organization is to create world abundance through business re-education. What is this world abundance? And what is this business re-education? Business re-education वही चीज है जो आपका जो सोच लेके ये बिजनेस शुरू किए थे उसको आपको दोबारा आपको रिमाइंड करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज बिजनेस री-एडुकेशन. दिस बिजनेस री-एडुकेशन आपको ये जगह में बार बार रिमाइंड करते हैं कि दीज आर द प्रोसेसेस जो आपको फॉलो करना है, विच विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट, अ फास्टर रिजल्ट. द पॉइंट इज, विदाउट अ जीपीएस आप बिना जीपीएस का भी लोकेशन में पहुंच सकता है. कैसे? या तो आपको रास्ता पता है, या तो आपको पता नहीं है, लेकिन रास्ते में जो लोग हैं आपको गाड़ी रोक के खड़ा करके किसी को पूछ के आपको डेस्टिनेशन पहुंचेंगे. हम लोग पहले पहुंचते थे, जब जीपीएस नहीं था तब भी हम लोग लोकेशन में पहुंचते थे. बट जीपीएस आने के बाद क्या हुआ, एक है कि जो रास्ता हमको पता है वो रास्ता में कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं है, वो हमको पहले पता चलता है, so that we can divert our route and take a detour to the destination. Second, we don't have to stop our vehicle each and every time to ask somebody, because that somebody can always make a mistake. So this is all what it is, business re-education.
Business re-education is actually a GPS to your business, जहाँ पे we help you to actually define the different responsibilities, आपका different department का जो process है, जो system है, उसको और एक बार स्टडी करके करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको एस्टैब्लिश करना इज द वर्ड ऑफ बिजनेस री-एजुकेशन. My name is Kaushik Chandra and I am the founder and CEO of the company called Atkonnectt Redefining Businesses. We have got a team of experienced people who normally work with different entrepreneurs. आपका बिजनेस में कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ असेसमेंट करने के लिए, कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए, they are very good at doing that, and at the same time to choose a right person in your organization. We can help you by understanding the assessment process of that particular person, जिसको आप लेना चाहता है या तो जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर देने के लिए पहले आप उसको स्टडी करना, उसको असेसमेंट करना, उसका बिहेवियरल स्टाइल समझना बहुत जरूरी होता है. Because once it is given, it is given. We specialize in creating mastery in your business process and to find out जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत लोग आजकल बिजनेस करना चाहते हैं, सोच में है कि बिजनेस करूं ना करूं, कौन सी बिजनेस करूं. So we actually help them to understand and find out the why of the business. बिजनेस करना है वो बात सही है, कौन सी बिजनेस करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो बिजनेस करना है उसका साथ आपका अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है. आपका वाई मैच होना चाहिए विद द बिजनेस. अगर मैच होता है आपका वाई, क्यों करना है बिजनेस, अगर ये चीज आपको सेटल होता है, देन ऑटोमेटिकली क्या करना है, हाउ टू रन द बिजनेस, कब शुरू करना है, सब कुछ रेडी होता है पॉइंट बाय पॉइंट. हेंस द वर्ड इज व्हाई, व्हाट, व्हेन, कौन कौन रहेगा आपका साथ, एंड देन ऑटोमेटिकली अगर दिस 4 points, दिस 4 W's आर रेडी, देन ऑफ कोर्स बिजनेस करने का तरीका ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है. नॉर्मली क्या होता है, लोग पहले कैसे करना है वो सोचता है, हाउ कैसे करूंगा. इतना बिजनेस, बहुत लोग बिजनेस करते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाते. इट इज ट्रू, कुछ लोग कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते. इट इज वेरी ट्रू, बहुत सच है इसमें. लेकिन जिसका बिजनेस करने का तरीका में वाई, व्हेन, व्हाट एंड हु सेट हो जाता है, उसके लिए कैसे करना है डिफिकल्ट नहीं होता है. So in any case, if you're interested to know more about this, कैसे why choose करना, how to establish, कब करना, क्या करना, किसके साथ करना, we can already help you. We are already doing this and we can help you in understanding that. So please join me on any of the day where you are busy and when you are free from your busy schedule. जब आपको टाइम मिलेगा और हमारा टाइम एक साथ मैच करेंगे, वी कैन ऑलवेज हैव अ फ्री 45-minute सेशन विद यू टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर व्हाई. बिकॉज इफ दैट व्हाई इज क्लियर, देन व्हेन, व्हाट, हाउ, एवरीथिंग गेट्स क्लियर. So we meet you again on 28th of August, 10 a.m., same time, on the same platform, and take these discussions much further about the pros and cons of that 5 points. उसको लेके हम लोग और थोड़ा detailed discussions करेंगे. Thank you very much. My number 9769636159. My email ID is there. आप जरूर हम लोग को follow करें at Facebook, at Instagram, at LinkedIn. We will be happy to share our process. We will be very happy to share our experiences handling different organizations, and this will definitely bring a change within your organization.
Thank you so much. We see you again.